Good evening, students. Today I am going to teach you the application of Gauss law. Last class में हमें पढ़ी थे what is Gauss law. मैं आउथर कह दूची Gauss law is what? It deals with the net flux linked with a closed surface. हमें गोटे closed surface सहित केते flux linked अछि हमें ताको Gauss law apply करी easily calculate कर दे परिबा. तले law कहूची the flux linked with the closed surface is equal to 1 by epsilon times the charge enclosed within that surface. हमें एमती लिखि परिबा Gauss law, that is phi is equal to QENC by epsilon 0. This is your Gauss law. अच्छा तार application कौन कहूची ना तार तीनटा applications अछि and this is the first application. आम पाखरे गोटे इनफाइनाइट लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अछि हम पाखे तामाने एमती कंसीडर कर परिबा गोटे वायर अछि ता ऊपर हम पूरा सबतक चार्ज से वायर लेंथ ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हेछि लाइक हम जो तीनटा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढितले ता भितर एटाला फर्स्ट टाइप रो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दैट इज कॉल्ड लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ताले एमती गोटे लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अछि ए लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पाई एक्चुअली इट इज अ इनफाइनाइट लाइन चार्ज माने बहुत लंबा वायर गोटे ता पाई हमें तार एनी साइड पॉइंट रे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बाहर करबार अछि ताले इतला काला फील्ड माने इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू वन इनफाइनाइट लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. बिफोर गोइंग इनटू द डेरिवेशन लेट अस अंडरस्टैंड द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड. मोड कोन करछि ना गोटे लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ते नेछि इनफाइनाइट लाइन चार्ज माने दिस end extends up to infinity, this end up to extends up to infinity. अच्छा एटा मु पॉजिटिव चार्ज रो डिस्ट्रीब्यूशन नै छी तने चाहे नेगेटिव चार्ज भी नै पाइबो. अच्छा ए पॉजिटिव चार्ज पई ए पॉइंट रे मते फील्ड जानिबार अछि तो मु कोन कली ए टू किछि डिस्टेंस रे गोटे पॉइंट नेली जो पॉइंट रे मते इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बाहर करबार अछि एटा ला लेट्स से मु गोटे सेगमेंट नेली जार लेंथ होची l. मन रख this point is the midpoint of this length. A2 किछि डिस्टेंस रे बा l/2 डिस्टेंस रे मोट छोटिया स्मॉल एलिमेंटल चार्ज कंसीडर करी काहे कि ना as it is a infinite or continuous charge distribution पाई हमर संति किछि फार्मूला नाही, so we can take the use of calculus to calculate the electric field here. सेति पाई कोन कली प्रथमे गोटे छोटिया पोर्शन ते कंसीडर कली because इटा एते छोटो पोर्शन as if I can treat this small portion to be a point charge. ताले point charge पाई electric field रो strength or direction since it is positive 80 आ पाई a point रो electric field रो direction is outward त माने away नै गली away from the charge, so एटा हला electric field because of this small segment. अच्छा देखो A2 एक्जेक्टली ये जतिके डिस्टेंस एपटे सेतिके डिस्टेंस रे आ गोटे स्मॉल एलिमेंटल चार्ज मु कंसीडर कली काहे कि ना हमको ओवरऑल जानबार अछि फील्ड रो डायरेक्शन रे कोपटे ताले या पई ए पॉइंट रो फील्ड ला ए डायरेक्शन रे. सिमिलरली इट कैन बी ट्रीटेड एज ए पॉइंट चार्ज ताले पॉइंट चार्ज आर चार्ज हला पॉजिटिव चार्ज पई फील्ड रो डायरेक्शन हला आउटवर्ड. ताले देखो ए पॉइंट रे दीटा फील्ड रहला गोटे रहला ए एलिमेंट पई आ गोटे रहला ए एलिमेंट पई ताको मु नाम दे देली डेल्टा E1 एंड डेल्टा E2. डेल्टा E1 रो डायरेक्शन एपटे डेल्टा E2 रो डायरेक्शन एपटे. सी मु कोन कली ना ए इलेक्ट्रिक फील्ड गुडा को मु ताको रिजर्व कर देली इनटू टू कंपोनेंट्स. वन पैरेलल टू द लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, अनदर वन परपेंडिकुलर टू द लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. ताले देखो जेतु गोटे फील्ड ए डायरेक्शन रे अछि डेल्टा E2 तार गोटे कंपोनेंट एपटे रहथिबो आ गोटे कंपोनेंट एपटे रहथिबो बिकॉज़ आई हैव रिजॉल्व डेल्टा E2 into two perpendicular or two rectangular components. So delta E2 रो गोटे component रहिला perpendicular to the line charge distribution, one component is parallel to the line charge distribution. Similarly for this small element the field will be one along the along perpendicular to the line charge distribution and one along the parallel to the line charge distribution. ये डायग्राम रे क्लियरली देखो ये डेल्टा E1 और डेल्टा E2 रो ये जो पैरेलल कंपोनेंट दुटा दे आर ऑपोजिट इन नेचर
and because they are treated to be a point charge semanko magnitude saman thibo they will cancel each other and these two fields एमानकर जो माने लाइन चार्ज सहित जोटा परपेंडिकुलर डायरेक्शन रे अछि as their direction are equal so they will be added up to give rise a net electric field. See, this is the case of your infinite line charge distribution. माने रखो बार नंबर कोची infinite line charge distribution. So जदि हमें यार field रो nature देखिबा त the field will be like this. कोन ना एटा को जदि मो गोटे सिलिंडर रो एक्सिस हिसाब रे नै जिबी यदि लाइन चार्ज टा गोटे सिलिंडर रो एक्सिस हिसाब रे नै जिबी ताले फील्ड रो डायरेक्शन विल बी अलोंग द बेस ऑफ द cylinder माने ए डायरेक्शन यदि पॉजिटिव चार्ज एटी रहला सपोज लेट्स से दिस इज द एटा ना सपोज लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यदि गोटे पॉइंट 18 नेली ताले ए टू कम करबी ना ए पॉइंट को जॉइन करी आउटर डायरेक्शन में नै गले फील्ड रो डायरेक्शन हबो सेटा सिमिलरली एटी यदि गोटे पॉइंट नेबी ताला को जॉइन कर दियो एंड आउटवर्ड डायरेक्शन रे गोटे नेयो दैट आउटर डायरेक्शन विल शो द फील्ड ताले एटा हला बिकॉज़ दिस लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हैज सिलिंड्रिकल सिमेट्री ताले एटा हला ओवरऑल डायग्राम टा जानिबा पई फील्ड रो डायरेक्शन कोआडे तमे मने रखो हियर a line टा parallel to the line charge distribution and this line is perpendicular to the line charge distribution. मने रखो parallel to the line charge distribution रे no field and perpendicular to the direction रे field रहोची. Now let us come to your derivation. This will be a long question asked in your exams. कोन एटी मु करा दै छी देखो ना मु गोटे line charge distribution नै छी. So this is a positive line charge distribution. जहाँ linear charge density होची lambda. I have taken lambda is the linear charge density, and you know lambda is equal to dq by dl, or simply we can take q by l, or q is equal to lambda into l. Q is equal to lambda into l. Now let us come to this point. It is a line charge distribution. The linear charge density is lambda. A to r distance रे गोटे point रे मते electric field strength बाहर करियर अछि. So मु कोन कली ना देखो एटा application of Gauss law. Gauss law apply करिया पई हेले we need to have a closed surface. अच्छा सब बळे मन रखिता Gauss law apply करिया को हेले we need to consider a closed surface. हमको गोटे closed surface रो consideration करिया को पड़िबो, and that closed surface is called your Gaussian surface. See, Gaussian surface can take any shape, but according to our situation we can take some regular geometry so that it will be easy for us to calculate the electric field strength. ताले एटी देखो एटी सिचुएशन सजेस्ट करूची जे we will take a cylindrical Gaussian surface to calculate the electric field strength. मु कोन कली ना ए पॉइंट p r डिस्टेंस रे r हला गोटे सिलिंडर कंसीडर कली जहां रेडियस हला r जहां लेंथ हला l. Remember, and see, as it is a point charge, as it is a positive charge distribution, so at point p the electric field is directed outward. अच्छा तमाने मोर Gaussian surface consider कली. Remember, Gaussian surface, the choosing of a Gaussian surface depends on the symmetry of the situation. It is symmetric or not? Now I can take why I am taking this cylinder, because a line charge टाको जदि मो axis रे रखिबी ए axis थारु गोटे सिलिंडर रो सरफेस बा कर्व सरफेस रो डिस्टेंस सब बळे समान ताले इटी सिमेट्री आसी गला सेति पई मु इटी गोटे सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस कंसीडर करै छी. त देखो जो पॉइंट रे तुम पचार जाय छी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बाहर करिया पई मु कोन कली गोटे छोटो पोर्शन टे कंसीडर करी, एंड दैट स्मॉल रीजन विल बी योर ds. सी हम गोटे क्वेश्चन करतले गोटे सिलिंडर सहित फ्लक्स कैलकुलेट करिया पई लास्ट क्लास रे. ताले इटी कोन हला सिलिंडर गोटे सिलिंडर टे अछि, सिलिंडर तीनटा सरफेस, टू बेस सरफेसेस एंड वन कर्व सरफेस. ये टू बेस सरफेस 1 and 2 and the curved surface is marked as 3. मोटी 1 2 3 मार्क कर दीजिए. The total flux will be the sum of contribution of all the three surfaces. So phi 1 plus phi 2 plus phi 3. And clearly you see, मुझे दी base surface 1 कथा consider करीबी, this surface orientation रोची ऊपर को, and electric field is, remember electric field is what? Just like this. Field a direction रे रोची, the axis हला cylinder रा field a पटे रोची, तो electric वाला cylinder रा axis, so field a पटे रोची, the electric field, and this area vector is perpendicular, so flux is 0. Similarly for your surface number 2, because a point यदि point a पटे नेबी, तो electric field हला a पटे,
and area vector direction downward, angle is 90 degree. So phi 1 and phi 2 is 0. So only we have to, when you are dealing with the total flux phi is equal to will be your q phi 3, and phi 3 you can calculate in this way. अच्छा देखो मैं small portion consider करछि a point P रे I have taken a very small portion whose area is ds. The direction of ds is outer normal. तामाने a case रे outer normal electric field they are in the same direction. So the angle between them is 0 degree. Now the total flux phi 3 is equal to integration of E ds is the general formula to calculate the flux. So E ds ra integration. E ds means E ds cos 0. Why? Angle between E vector and ds vector is 0 degree as they are in the same direction. So out it into the a line charge distribution ru E point ro distance se cylinder ro curved surface ta axis ta equal distance thiba jogu this electric field is uniform and it is taken outside the integration. Now the surface integration of ds only remain. Acha eta kon now देखो it is the surface area of the closed or curved surface of the cylinder. ताले देखो मैं लिखि पारली phi is equal to phi 3 as phi 1 phi 2 is 0. So phi is equal to phi 3 and which is equal to E integration of ds. Phi अच्छा E integration of ds is equal to 2 pi rl. Why 2 pi rl? Because here I have considered the length of the cylinder is L and the radius of the cylinder is r, so the curved surface area will be 2 pi rl. That is the formula, equation 1. According to Gauss law, the net flux linked with a closed surface is qenc by epsilon 0. Here qenc, that is the most important part. देखो ये पिला माने मु जो Gaussian surface consider करिछि that say Gaussian surface, this is a infinite line charge. अपन एपटे आहुरी होती अच्छी charge एपटे भी आहुरी अच्छी, but our cylinder considered is lying within this region. माने A point to A point भितरे जेतिकी charge रहिला सबुतक से closed surface बा cylindrical Gaussian surface भितरे आसुची. So our QENC is a charge enclosed within this cylinder. ताले टाइम केते बाहर करबा देखो जदि यार लैम्बडा हला line charge distribution lambda, then lambda is equal to q by L according to our formula. ताले lambda is equal to or dq is equal to lambda into dl. इठी तो मो elemental length नहीं मो L length नहीं ची. So this formula lambda is equal to q by L. So q is equal to lambda L. So this portion's charge is given by lambda into L. So QENC is equal to lambda into L by epsilon 0. So according to Gauss law, phi is equal to lambda L by epsilon 0. Now both the flux will be equal. Now if we compare, we are getting E into 2 pi r L is equal to lambda L by epsilon naught. So L got cancelled and you are going to get E is equal to lambda by 2 pi epsilon naught r. I have multiplied 1 2 and divided 1 2. So it will be 1 by 4 pi epsilon naught 2 lambda by r. It is easy to remember. And if you plot a graph between E and R, you are going to get E and R. So we see this inversely proportional graph will be like this. And sometimes question will be asked to plot a graph between E and 1 by R. This is most important. E versus 1 by R. E versus 1 by R, the graph will be a straight line. E versus 1 by R, the graph will be a straight line, and you see the slope of the straight line, if it will be theta, then your tan theta is equal to lambda by 2 pi epsilon 0. Thank you.